हेलो इवनिंग बच्चों। आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के फर्स्ट लेक्चर पे फोकस करेंगे। ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन, एज द नेम इज itself indicating, those reactions which are involving the oxidation and reduction simultaneously. आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने का तरीका होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सिमिलरली रिडक्शन को डिफाइन करने का तरीका होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। If we analyze some of the conversions which we have indicated over here, in these conversions, we can observe that when H2S is getting converted to sulfuric acid, there is gain of oxygen. Hence, conversion of H2S to sulfuric acid is an oxidation process. SO2 जब SO3 में जाता है, तो again there is a gain of oxygen and this is oxidation. Similarly, when nitric oxide is getting converted to NO2, it is involving the gain of oxygen. And therefore, NO conversion to NO2 is an oxidation process. Sodium getting converted to sodium ion, there is loss of electron that is taking place. तभी ये possible होगा कि सोडियम या कोई भी मेटल आयन में कन्वर्ट हो। ठीक है। So in this case, what we will be saying, it is involving the loss of electron. And what is the loss of electron? It is oxidation. So when metals are getting converted to their respective ions form, positive ions, basic radicals form में, तो उसे हम oxidation बोलते हैं। Magnesium ion is getting converted to magnesium by the gain of electron, and the gain of electron, as already indicated, is said to be the reduction. So I can say one thing, that magnesium 2+ ions is getting reduced to the magnesium atom. Cl2 जब HCl में जाता है, so it is involving the gain of hydrogen, which is called as reduction. ठीक है। But there is one problem in understanding these definitions related to oxygen and hydrogen. What is that? If I consider the example of SO2 to sulfuric acid, there is gain of oxygen taking place. Fine. And similarly, there is the gain of hydrogen. Fine. So what should we say in this case? Is SO2 get oxidized to sulfuric acid, or has it been reduced to sulfuric acid? Similarly, when nitric acid is converted to NO2, there is loss of oxygen and there is loss of hydrogen also. So what does this indicate? That here also it is inconclusive to decide whether HNO3 is reduced to NO2 or it is oxidized to NO2. To overcome this problem, we are defining a term called as oxidation number. ठीक है। Oxidation number क्या होता है? Let us analyze now. It is saying that it is defined as, इसकी definition है, it is defined as the charge carried by an atom when the bond associated with it are assumed to be 100% ionic. ठीक है। This is a very important term in the definition, 100% ionic. And of course, another important thing is charge carried by an atom. ठीक है ना? So we know this thing from the basic definitions of electronegativities and the periodic properties. Whenever there is a presence of a covalent bond in a compound like HF, fluorine is more electronegative atom. Fine. Fluorine being more electronegative atom is having the partial negative charge, and hydrogen atom is having the partial positive charge. This is the actual charge it is having over here. But if I assume the bond to be 100% ionic, then I'll be saying that the electron are entirely shifted towards the fluorine atom, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आता है और फ्लोरीन पे -1 चार्ज आता है। ठीक है। तो I will say that oxidation number of hydrogen is +1
and oxidation number of fluorine is equal to -1. Is it clear? If I consider the molecule of water where there is a bond between the oxygen and the hydrogen atom and there is an electronegativity difference, oxygen is considered to be the second most electronegative atom of the periodic table. तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा इस बॉन्ड की वजह से और इस बॉन्ड की वजह से भी नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज. Again, if I assume the bond to be 100% ionic in this case, oxygen will be present in -2 charge and hydrogen will be present in +1 charge. Both these hydrogen atoms are having the charge equal to +1. That is what we are saying from the very basic definition of the oxidation number. Similarly, what we are saying, a compound called as hydrogen peroxide is indicated over here, where there is a link between the two oxygen atoms, and whenever two oxygen atoms are linked together, this is called as the peroxide linkage. ठीक है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है, और दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में जो बॉन्ड है, ऑफ कोर्स देयर विल नॉट बी एनी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड. So again, assuming the bond to be 100% ionic in this case, hydrogen पे क्या चार्ज होगा? +1, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा? It will be -1. So both these oxygen atoms in hydrogen peroxide is having the charge equal to what? That is equal to -1. Similarly, this is a compound called as chromium peroxide, CrO5 on the right hand side that I have written. There are two peroxide linkages, and chromium is of course a metal, an electropositive metal, and this is a peroxide linkage, this is also the peroxide linkage. Chromium being more electropositive metal in this case, ऑक्सीजन पे क्या चार्जेस आए हैं? पार्शियल नेगेटिव, और जो सबसे टॉप पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है उस पे चार्ज क्या आएगा? 2 पार्शियल नेगेटिव. क्रोमियम पे क्या चार्ज आएगा? दैट विल बी +6. That is the oxidation number of chromium. ठीक है? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इस एग्जांपल में कितना आ रहा है? दैट इज कमिंग आउट टू बी +6. सो वी आर अंडरस्टैंडिंग. क्या तो आप ये पूछ सकते हो कि क्या सर ये जरूरी था कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मुझे किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए? तो वी विल सी यस, इट इज नेसेसरी टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, बट because every time it is not possible for me to draw the structure, so we have framed certain rules of the oxidation number calculation that we will be discussing in the later part of the lecture. This is another compound, K3CrO8. It has the presence of 4 peroxide linkages over here, and if you consider this chromium atom, it is forming how many covalent bond over here? It is forming 5 covalent bond. Of course, it is all bonded to oxygen atom, and therefore the oxidation number of chromium will be +5 in this case. In case of sulfuric acid, what we can say is sulfur atom पे क्या charge होगा बच्चे? That will be equal to +6, because इस oxygen पे -2 charge होगा, इस पे -2, और sulfur oxygen bond की वजह से यहाँ पर -1 charge आएगा. Although ये दोनों oxygen पे total charge होगा -2 होगा, but this confirms that sulfur is forming 6 covalent bond with 6 more electronegative oxygen atoms. Therefore, what is the oxidation number of sulfur? That is equal to +6. Similarly, I am giving you 2 more examples in which there is also the peroxide linkage present. So these 2 oxygen atoms will overall be having the -2 charge, but this one is having -1, this one is having the -1 charge. This one will be having overall -2, and sulfur oxygen की वजह से oxygen पे charge -1 होगा. This is -2, this is -2. Again, sulfur will be present in +6 oxidation state. ठीक है ना? Same is the case with this example that is called as peroxodisulfuric acid. इसमें भी ये sulfur +6, this sulfur also present in +6 oxidation state. ठीक है? So हमारे इस पूरे एनालिसिस में अगर हम देखें तो हमने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए हैं जिनको हम रूल्स
ऑफ कैलकुल रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर की फॉर्म में एनालाइज कर रहे हैं। द फर्स्ट रूल सेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज टेकन एज +1, ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? NaH हो गया, CH2 हो गया, दिस इज सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। सोडियम पे तो कभी नेगेटिव चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? -1 में प्रेजेंट है। कैल्शियम +2 में है, तो हाइड्रोजन डेफिनेटली कौन सी स्टेट में है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और आप इन सारे एग्जाम्पल्स में ऊपर से लेके नीचे तक चेक करेंगे तो हाइड्रोजन इज इन एवरी केस is coming in which oxidation state? It is coming in +1 oxidation state wherever it is present in these structures, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है? +1 होता है, because it is considered to be the least electronegative atom among those elements which form the covalent bonds, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन एक डाइवेलेंट एटम है, वो 2 बॉन्ड बनाता है, और एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्लोरीन, द बॉन्ड विद फ्लोरीन, बाकी सब जगह पर ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है ना। केवल जब वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तभी ऐसा होगा कि ऑक्सीजन जो है इट विल बी प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, which we have highlighted it over here that OF2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू? इट इज +2, ठीक है। अदरवाइज ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है? -2 में। और ये बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जहां कहीं भी पेरोक्साइड लिंकेज आया, जहां कहीं भी पेरोक्साइड लिंकेज आया, वहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? इट इज -1, ठीक है। It is -1 oxidation state. So this is the rule that we can apply for calculating the oxidation number. The third point says oxidation number of alkali metals, lithium, group first element, sodium, potassium, rubidium, cesium, जो इनकी वैलेंसीज हैं, ठीक है ना, वही इनका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर भी है, that is equal to +1 in this case, ठीक है। तो सीजियम पे क्या चार्ज है? सीजियम प्लस। लिथियम पे क्या चार्ज है? Li+, ठीक है ना। इसी तरीके से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जितने भी हैं, चाहे वो बेरिलियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, स्ट्रोंशियम हो या बेरियम हो, दे ऑल आर प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। द फोर्थ रूल सेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट in its free or uncombined state is taken as 0. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सोडियम इज नॉट फॉर्मिंग एनी बॉन्ड, देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, therefore the oxidation number is 0. Potassium, iron, what is the charge on these element? It is 0. अगर मैं मॉलिक्यूल कंसिडर करूं Cl2, if I consider a molecule Br2, क्लोरीन मॉलिक्यूल में जो दोनों क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट हैं उनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर नहीं है, तो डेफिनेटली नो चार्जेस विल बी अपीयरिंग ओवर हियर एंड द स्टेट इज 0. सिमिलरली P4S8 etc, all these are the examples in which the state of the element will be taken as 0. इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल फॉर कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर is that if we considering the molecule, तो molecule पे total charge मिला के किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। और अगर मैं कोई कटाइन या अनाइन को कंसिडर करूं तो what will happen? Whatever the charge present on it, that will be equal to the sum of the charges on the ions. तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग इलस्ट्रेट कर लेते हैं अपने एग्जाम्पल से। The example I have taken is KMnO4, पोटेशियम पे चार्ज है +1, मैग्नीज इज हैविंग द चार्ज एज x, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, वी हैव ऑलरेडी सीन, और इस KMnO4 पे पूरे पे मिला के चार्ज किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है? +7। सो इट इज, मैंने उन एटम को अंडरलाइन कर दिया है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑफ कोर्स पोटेशियम को तो हमें पहले से ही पता था, ऑक्सीजन के लिए तो हम ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं।
MnO2 के लिए निकालेंगे तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लेते हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो I will say the total charge is like this, तो X equal to +4 in this case, ठीक है। K2CrO4 is +1 into 2, chromium पे charge X -2 into 4 because 4 oxygen atoms are there, so chromium is present in +6 oxidation state. In case of KiO3, it is +1, iodine is X, it is -2 into 3 is equal to 0. So iodine कौन सी state में आ रही है? It is +5. For K2Cr2O7, it will be +2 plus 2x minus 14 equal to 0. तो यहाँ से chromium का oxidation number जो आएगा that will be +6. For sulfuric acid, it will be +1 into 2 plus x plus -2 into 4, that is equal to 0. Therefore, x will come out to be equal to +6 oxidation number. For sulfurous acid, it will be 2 plus x minus 6 equal to 0, x equal to +4. It is +2 plus x minus 8 equal to 0. So x will be equal to +6 in this case. It is +1 plus x minus 6 equal to 0. x का नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आता है। अगर मैं किसी आयन के बारे में बात करता हूं तो मेरा ये कहना होता है कि सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, उन पे टोटल चार्ज मिला के किसके बराबर? -2 के बराबर। सो इट विल कम आउट टू बी +6। नाइट्रोजन के एक एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम पे टोटल चार्ज मिला के -1, so it comes out to be equal to +5. सल्फर के 2 एटम है, ऑक्सीजन is having 2 एटम, तो टोटल चार्ज is -2, x equal to +2। ठीक है, आप अपने आप भी सारे एग्जांपल्स को ट्राई कर सकते हो। फॉर फॉस्फेट आयन x plus -2 into 4 equal to -3, so it will come out to be equal to +5. For oxalate ion, it will be 2x minus 8 equal to -2. Carbon is present in +3 oxidation state. In magnate ion, it is x plus -2 into 4 equal to -2. So it will be equal to +6. For chromate ion, it will be x minus 8 equal to -2, x equal to +6. And for BrO3 minus, x minus 6 equal to -1, x equal to +5. That is the oxidation number of bromine in BrO3 minus. Sometimes we have been given the complex compound, and in most of the cases the central metal atom which is enclosed in the square bracket में जो ये वाला element होता है उसकी हमें oxidation number निकालनी होती है। We should know this thing कि भाई cyanide पे total potassium cyanide का formula क्या होता है? KCN होता है। तो cyanide पे charge क्या होता है? -1 होता है। सल्फेट आयन पे क्या चार्ज होता है? -2 होता है। नाइट्रेट आयन पे क्या चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। सो सिमिलरली applying these things, I can say it is 4 plus x minus 6 equal to 0. So iron is coming in the +2 oxidation state. Ammonia is a neutral molecule. Sulfate is having -2 charge, so it will be having the charge as equal to +2. In KAgCN2, potassium is +1, silver plus -1 into 2 equal to 0. So silver is coming out to be in the +1 oxidation state. In K3CuCN4, it will be 3 plus x minus 1 into 4 equal to 0. So x will come out to be equal to +1. On the right hand side, I have written an example K2ZnCN4. It is +2 plus x minus 4 equal to 0. So x equal to +2. That is the oxidation number. And H2O is a neutral molecule. X plus 0 is equal to +3. Iron is in the +3 oxidation state. For NiCO4, it is x plus 0. CO में CO को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, इसमें भी चार्ज क्या होता है? 0. सो ये निकल पे क्या चार्ज आया? 0 आया। और सबसे लास्ट में जो मैंने एग्जांपल दिया है +1 plus x minus 2 is equal to क्या हो गया? That is 0. तो x equal to +1 in this case. ठीक है? Is that thing clear? So this is how we, by using the rules for calculating the oxidation number, हम सारे rules को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं
ठीक है ना। और एक समटाइम्स इन द बुक्स यू विल फाइंड अ टर्म कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो मैं इस चीज को समझा रहा हूं कि जो Fe3O4 है, अगर मैं आपसे कहूं कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप लिखोगे 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी +8/3। तो क्या इसका मतलब ये है कि आयरन इज प्रेजेंट एज +8/3 चार्ज? क्या चार्ज कभी फ्रैक्शनल में हो सकता है? चार्ज तो क्वांटाइज रहता है। आई हैव अज्यूम्ड द बॉन्ड टू बी 100% आयनिक। भाई चार्ज जो होगा वो हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा। तो हमने ये क्या निकाल दिया यहाँ पर? एक्चुअल में Fe3O4 जो है इट इज एग्जिस्टिंग एज FeO डॉट Fe2O3, ठीक है ना। तो FeO जो है वो उसमें आयरन +2 में है, और यहाँ पर आयरन +3 में प्रेजेंट है Fe2O3 में। सिंस देयर आर 2 iron atoms, the total charge becomes +2 on one Fe and +6 on the other 2 Fe. And I'm dividing it by 3. I'm getting the same value as I have obtained directly from the rules of calculating the oxidation number. एक्चुअल में तो आयरन +2 और +3 में ही होता है ना, फेरस और फेरिक में ही प्रेजेंट होगा ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इट इज एक्चुअली द एवरेज वैल्यू ऑफ चार्ज, एवरेज वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है ना। Na2S4O6 है, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो इट इज 2 + 4x - 12 इक्वल टू 0। यहां से ये वैल्यू आती है 2.5। इसका मतलब ये है कि एवरेज वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ऑल द सल्फर एटम इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 2.5। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया आप लोगों के लिए Na2S4O6 का। इसमें ये सल्फर जीरो स्टेट में है, ये भी जीरो स्टेट में है। ये वाला सल्फर +5 में प्रेजेंट होगा और ये वाला सल्फर भी +5 में होगा, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन -2 में है, चारों ऑक्सीजन। तो ओवरऑल एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी? 5 + 0 + 0 + 5। And how many sulfur atoms were there? It was 4. So it is coming out to be 2.5. 2.5 is the average value of the charge. Similarly, in Na2S2O3, in many books you will find the structure like this way or this way, ठीक है ना। मैं दोनों से ही बता रहा हूं आपको। अगर मैं यहाँ से सल्फर का स्टेट निकालूं तो इट इज 0, और इस सल्फर से वैल्यू निकालूं सो इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू +4। तो ये क्या होगा? +4 + 0/2, दैट इज इक्वल टू 2। और अगर इससे निकालता हूं तो ये सल्फर जो है वो -1 चार्ज पे है, और ये जो है ये +5 पे है। तो इट इज 5 - 1/2, दैट इज 2। और अगर आप डायरेक्टली भी निकालते तो इट विल बी 2 + 2x - 6 इक्वल टू 0, एंड दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं डायरेक्टली, वो आपको एवरेज वैल्यू ऑफ द चार्ज देता है, which may or may not be equal to the actual charge present on the atom, ठीक है। And in addition to this, we should also remember from the chemical bonding concept, we can remember that halogen family जो होता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें अगर हम, तो इन सारे एलिमेंट्स में फ्लोरीन ही अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही एग्जिस्ट होती है बस। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड में -1 होगी और मैक्सिमम +7 होगी। अगर HCl लेता हूं तो क्लोरीन -1 में होगा, अगर HClO4 लेता हूं तो क्लोरीन +7 में है, ठीक है ना। ऑक्सीजन फैमिली जिनको हम चैल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसमें मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है? -2 एंड मैक्सिमम +6। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन एटम कैन नॉट हैव, बट सल्फर एंड बियॉन्ड, सपोज आई राइट H2S एंड H2SO4, सल्फर की मिनिमम स्टेट -2 हो गई और सल्फर की यहाँ पे क्या स्टेट हो गई? +6 हो गई, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर जिनको हम नाइट्रोजन्स भी बोलते हैं, ठीक है, have the minimum oxidation state as -3, maximum is +3. In case of NH3, nitrogen is present in -3. In case of HNO3, nitrogen is present in +5 oxidation state. This is the additional information which you should know, because whenever we write any reaction, suppose मैंने एक reaction लिखी
zinc reacting with copper ions, forming zinc ions plus copper. ठीक है, इस रिएक्शन में हम इसको एक redox reaction बोलेंगे, because in this case the oxidation and reduction are taking place simultaneously. Zinc is getting oxidized to zinc ions, copper ions is getting reduced to copper. So this is oxidation, this is reduction. ठीक है, तो जिंक जो है वो क्या हुआ, वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है वो दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है. Therefore zinc is called as reducing agent. ठीक है, और we use the term reductant for them. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कॉपर आयंस के लिए बोलूंगा तो आई विल से कॉपर आयन इज ऑक्सीडाइजिंग जिंक टू जिंक आयन, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and I can say it is acting as an oxidizing agent or oxidant. That is the thing. So किसी भी redox reaction में अगर हमसे ये कहा जाता है कि आइडेंटिफाई करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, we will be doing we will be checking the oxidation number of the elements. In like suppose in this example chromium is present in +6, chromium is in +3. So what is this happening? I will say it is getting reduced. Sulfur from +4 is getting oxidized to +6. So this is oxidation. Okay. So dichromate ion in this is actually behaving as oxidizing agent, and sulfite ion in this is behaving as reducing agent. In our next lecture, we will be focusing on the fact that is related to the different types of redox reactions, and in addition to this, the balancing of the redox reaction. Fine. So I hope all of you have understood this. If there is any issue, if there is any problem, you can WhatsApp me, you can write in the chat box also, or you can write down in the comment box also. Thank you.